I'm Dr. Richa Singh. Welcome you all to this live session of Urvara. And as you all know, I'm Dr. Richa, the founder and director of this initiative Urvara, which we have taken to educate you people so that you can understand your problems better and you can choose your treatment wisely. And I'm also practicing as a senior consultant IVF at Max Healthcare New Delhi at Saket, Manshir Park, and Max Gurgaon. And I'm also available in Lucknow on every Saturday. So friends, this is the month of September और September month होता है PCOS awareness का and that's what the topic of today's live is. और आज हम बात करेंगे because PCOS एक ऐसा प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट every 10th गर्ल या वुमेन को इफेक्ट कर रहा है and it has become now a very routine kind of a issue जो आप बात करोगे किसी से भी तो आपको लगेगा अरे मुझे भी PCOS है मुझे भी PCOS है. So इट्स नॉट द ओनली प्रॉब्लम कि पीसीओएस है बट इट इज अ होल मेटाबॉलिक सिंड्रोम. इसीलिए इसको पीसीओएस के अलावा पीसीओडी भी कहा जाता है. एंड व्हाट इज इट? इट इज अ जेनेटिक हार्मोनल मेटाबॉलिक एंड रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर जो विमेन को इफेक्ट करता है और मेजर कॉज है विमेन में इनफर्टिलिटी के लिए. मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स पीसीओएस के कंसेप्शन में उनको प्रॉब्लम आती है. And not only the conception, अगर हम long term में बात करें, so it leads to anxiety, depression, obesity, endometrial cancer, type 2 diabetes, and cardiovascular diseases. So we thought that this is one topic that our patients should be all aware about so that they can manage it properly, so that they don't have to face all those consequences. So जैसा कि मैंने बोला कि almost मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को 1/10 पेशेंट्स को पीसीएस होता है. 50% पेशेंट्स को डायग्नोज ही नहीं हुआ होता है. एंड कैसे डायग्नोज होता है? उसके सिम्टम्स से. जब भी पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं, अगर उनको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं या फेस पे अननेसेसरी हेयर हो रहे हैं या पिंपल्स निकल रहे हैं और देयर इज अ वेट गेन एंड ऑन अल्ट्रासाउंड इफ दे आर फाउंड दैट उनको ओवेरियन सिस्ट है, मीन्स मल्टीसिस्टिक ओवरीज हैं, और दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट प्रेग्नेंट, that is the time when they are diagnosed that they are suffering from this problem. और इस प्रॉब्लम में होता क्या है, how and why it happens? So most likely it is basically the imbalance of the hormones inside the ovary and जो levels होते हैं male hormones के, that is androgens, उनके levels as compared to the normal female, it becomes higher and that causes disturbances in ovulation जिसकी वजह से उनका cycle irregular होता है. And not only this, but excessive insulin भी ऐसे patients में पाया जाता है जिसकी वजह से they have insulin resistance also. And not only this, but आपने देखा होगा जिनकी family history होती है PCOS में, उनके mothers में अगर history है तो उनकी daughters को या daughters की sisters को chances होते हैं polycystic ovarian syndromes के. So this is also a genetic transposition. एंड नॉट ओनली दिस बट इन्फ्लेमेशन, कोई स्ट्रेस होता है उससे भी हार्मोन्स बढ़ते हैं, कॉर्टिसोल बढ़ता है जिसकी वजह से ये आपके लेवल्स को बॉडी में बढ़ाता है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द लाइफस्टाइल फैक्टर्स, दैट इज अगर डाइट पुअर है, इफ यू आर स्मोकिंग, एंड सो ऑल दिस लीड्स टू ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ये दोनों चीज़ें मिलके पीसीएस को एग्रीवेट करती हैं ना. होता क्या है पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, क्यों प्रॉब्लम आती है पेशेंट्स को कंसीव करने में? सी नॉर्मली क्या होता है, यू कैन सी इन द अपर पार्ट ऑफ द ग्राफ कि एक विमेन को जब साइकिल आता है, सो साइकिल के डे 1 से उसके जो अंडे होते हैं, जो छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, दे स्टार्ट इंक्रीजिंग इन साइज एंड आउट ऑफ विच ओनली वन फॉलिकल इज द वन जो बड़ा होता है, बाकी सारे फॉलिकल्स रुक जाते हैं एंड फाइनली वो बड़ा होके अपने टाइम पे एलएच सर्च के बाद ओव्यूलेट होता है जिसमें से एग निकलता है एंड दैट इज हाउ अ बेबी इज फॉर्म. But what happens in cases of PCOS? In PCOS, what happens is that all the eggs, they are increasing in size in the early follicular phase. But at a particular level, their development stops. जिसकी वजह से जो एक फॉलिकल को enlarge होके ओव्यूलेट होके एग रिलीज करना होता है नहीं होता है, एंड सारे फॉलिकल्स जो होते हैं वो enlarge हो जाते हैं एंड दे डू नॉट रिलीज एग्स and instead they form as cyst. इसीलिए ऐसी पिक्चर मिलती है that it is a multicystic or a polycystic ovary, that none of the follicles have increased in size or ovulated, rather has led to the cyst formation, and जिसकी वजह से conception में उनको प्रॉब्लम आती है.
सो ये तो हो गई पीसीओएस की बात, लेकिन करना क्या है, व्हाट इज द अप्रोच एंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड. सो नथिंग टू वरी इफ यू आर डायग्नोज विद पीसीओएस बाय द हेल्प ऑफ टेस्ट. जो बेसिक टेस्ट होते हैं जिनसे हमें पता चलता है, दैट इज LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इन द बॉडी, एंड अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स एंड द क्लिनिकल सिम्टम्स. सो इनके बेसिस पे हम डायग्नोसिस स्टैब्लिश करते हैं whether you are having PCOS or you're not having PCOS. So, in case you are found with PCOS, what is the first thing that you can do? This is the most important thing. हम wait करते रहते हैं डॉक्टर medication start करेगा. No, what you can do is lifestyle modification. Because if your weight is on a higher side, if your BMI is high and your weight is not controlled, then of course it will enhance your problem of PCOS. So सबसे पहले हमें क्या करना है, weight management करना है by choosing the right diet and the regular exercise. और ये किसी भी प्रॉब्लम के लिए इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच यू नीड टू डू इट. एंड पेशेंट्स इसी पे ही निग्लेक्ट कर जाते हैं. दे उनको पीसीओएस डायग्नोज हुआ, दे कम टू द डॉक्टर एंड दे इमीडिएटली वांट अ मेडिकेशन एंड अ ड्रग विच इज गोइंग टू सेटल देयर पीसीओएस, एंड दे डू नॉट वर्क ऑन देयर शेड्यूल एंड देयर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. इफ देयर आर स्टडीज विच सेज कि अगर आप अपने एक्सरसाइज करते हैं और आप अपने वेट को मैनेज करते हैं, सो अगर 5% रिडक्शन भी करते हैं, सो योर 15% फर्टिलिटी पोटेंशियल्स आर इंक्रीज्ड. And not only the fertility potential, many times menstrual irregularities are also corrected if your weight is corrected and your BMI is regulated. Your hirsutism, your development of facial hair, all these goes down with your weight management. So you understand how important it is. एंड अगर वो वेट मैनेजमेंट से भी रिस्पॉन्स नहीं आता है 5 to 6 months में, देन यू आर सपोज टू गेट द मेडिकेशन, मे बी मेटफॉर्मिन और मायोआइनोसाइटोल व्हाट्सएवर, along with the medications of the problems जो आपको हैं, चाहे वो hirsutism हो, menstrual dysfunction हो, चाहे वो acne हो या infertility हो. So you understand this is how the pyramid of PCOS treatment goes. First is lifestyle, then comes medications, then comes surgery, and then comes the IVF treatment. एंड डाइट की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स पीसीओएस में व्हाट यू हैव टू डू इज, बहुत बार लोग बोलते हैं मैम क्या डाइट फॉलो करें. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिक्रीज योर फैट कंटेंट, यू हैव टू डिक्रीज योर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, increase your protein diet, your vitamins, your minerals, your antioxidants, all this has to be increased. And जो carbohydrates भी आप लोगे तो it's going to be a complex carbohydrates. So maximum target ये करना होता है कि 1800 से 2000 कैलोरी से ज़्यादा डाइट आप ना लो. And almost 30 minutes exercise daily is going to help you in a great way. So this is what actually the management path of the patients who are having PCOS related infertility. यहाँ पे मैं सबसे important चीज़ आपको बोलना चाहूँगी. एक कंडीशन होती है जहाँ पे पेशेंट्स को सिर्फ menstrual irregularity है, और दूसरी कंडीशन होती है जहाँ पे उनको पीरियड्स भी रेगुलर हैं और साथ साथ उनको इनफर्टिलिटी भी है. यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है that patients think that due to their irregular cycle they are not able to conceive, and if their cycle is regularized they will be able to get pregnant. So in such situations what happens is कि अगर हम periods को regular करने जाते हैं, so usually we give oral contraceptive pills and all that. So अगर हम उसको regularize करेंगे, so of course the medications will not let the pregnancy happen. So ऐसे केसेस में जब आपको इनफर्टिलिटी है, यू हैव बीन ट्राइंग एंड यू हैव नॉट अचीव सक्सेस, देन योर फोकस शुड नॉट बी द मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, योर फोकस शुड बी ऑन इनफर्टिलिटी. बिकॉज ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो पेशेंट्स फेस करते हैं, और डे टू डे ओपीडी में जब भी वो आते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम्स उनको रहती हैं या ये क्वेश्चंस उनके माइंड में रहते हैं. Now, so we have done our weight loss, and after the weight loss, we are seeing that our infertility is not improving. Then we have to switch it over to medications. Now medications में भी बहुत सारे options होते हैं. It can be clomiphene citrate, it can be letrozole, it can be gonadotropin injections. So these have to be taken in a stepwise manner on the prescription of your doctor. मैंने बहुत बार देखा है लोग over the counter medications लेके pharmacist से खाते हैं without an ultrasound monitoring, without this thing. So please don't do that. Because जो clomiphene citrate है या letrozole है, they are limited
to be taken for say around 6 cycles. So अगर वो आपका cycle consume हो गया, now what next? So it is very important to take those medications along with ultrasound monitoring. और 6 cycles अगर हमने लेट्रोज लिया है या क्लोमिफेन लिया है, एंड इफ इट इज नॉट वर्किंग, देन इट इज अ टाइम टू अंडरस्टैंड एंड रिवैल्यूएट कि नेक्स्ट स्टेप क्या, वेदर यू नीड इंजेक्टेबल गोनाडोट्रोपिन्स विद और विदाउट आईयूआई, या फिर लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, क्योंकि दोनों के ही डिफरेंसेस होते हैं. ईच पेशेंट हैज़ टू बी इंडिविजुअलाइज कि किस में हमें ड्रिलिंग करना है, किस में हमें इंजेक्शंस पे स्विच ओवर होना है. और जब गोनाडोट्रोपिन्स और ड्रिलिंग भी काम नहीं करते हैं, then it is the time for IVF. So these are the very important algorithms that one should remember in their mind. And PCOS के बारे में अगर मैं बात करूं as compared to PCOS and IVF patients, so ये कब choose patients को करना चाहिए? When their first and second line medications have failed. Clomiphene have failed, they have taken all the inductions, Letrose has failed, they have all taken all the inductions, they have undergone 3 IUI along with inductions, or their laparoscopic ovarian drilling has also not yielded result. That is the time when the patients need to switch it over to IVF. I remember one of the few patients, they have this problem in their thought process that उनको ऐसा लगता है कि ड्यूरेशन से फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड अगर हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, सो वी स्टिल कैन ट्राई फॉर मोर आईयूआईज. सो हियर आई वुड ट्राई टू से दैट PCOS पेशेंट्स में देयर इज अ सबसेट ऑफ पेशेंट्स जो खाली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही उनको रिलैक्स हो जाता है एंड दे गेट कंसीव. देयर आर सर्टन सबसेट्स जिनको ओवुलेशन इंडक्शन यानी क्लोमिफेन या लेट्रोजोल से आराम हो जाता है एंड दे कंसीव. Then again, there is another slot which is clomiphene resistant and letrose resistant, and they are the ones who get relieved by ovarian drilling or by gonadotropin injections along with OI. But there are certain subset of patients who are IUI, who have failed to IUI and who are resistant to other drugs. So these are the ones who are, supposed to go for an IVF. और ऐसे cases में अगर वो delay करते हैं, so it is their loss. And if we talk about what is the outcome of IVF in patients with PCOS, it is wonderful as compared to the tubal and other factors. See on the graph, you can see there have been so many studies which have compared कि PCOS में क्या outcome रहा है and tubal में outcome कैसा रहा है. So you can see almost all the factors, all the studies have shown कि PCOS patients में IVF का success ज़्यादा होता है. क्यों होता है? It is very simple to understand. IVF क्या है? IVF में हम लेडी के एग्स को निकालते हैं और एग्स से स्पर्म को मिला के बेबी को क्रिएट करते हैं, और उस बेबी को क्रिएट करने के बाद वाइफ के यूट्रस में डाल देते हैं. नाउ इन PCOS पेशेंट्स देयर आर लॉट ऑफ एग्स इन द ओवरीज. नेचुरल साइकिल में ऑफ कोर्स वो एग्स बड़े होकर ओव्यूलेट नहीं कर पा रहे हैं, बट जब हम उनको IVF के मेडिकेशंस देते हैं, सो ऑल द एग्स मेजरली गेट enlarged and they can be retrieved on the pickup. Since we have more number of eggs in polycystic ovaries PCOS patients, so हम उनसे ज़्यादा बेबीज को बना सकते हैं. सो उससे में क्या एडवांटेज होता है PCOS के और केसेस के कंपैरिजन में? Since we have more number of eggs, we have a choice of selection of the embryo. If we have A, B, C, of course we will have a choice of selection of putting a A grade embryo rather than a B grade embryo. Second, if we have good number of eggs, we can extend up to day 5 cultures in our lab, because we know कि day 5 baby create करने में embryos की wastage भी होती है. But since we are surplus, we can attempt that, and blastocyst transfer से of course IVF के chances better हो जाते हैं. IVF के success के chances better हो जाते हैं. And third, what is most important is that if your eggs are surplus, you can also freeze them as a backup for your ongoing pregnancy, or in case your cycle does not work, or you can also have a backup for the next pregnancy. So these are the advantages because of which the chances of success of IVF in PCOS patients are a bit higher than the other factors like tubal and the other pathologies. But the only requisite is that you should be in the right hands, because PCOS पेशेंट्स के लिए IVF एक चैलेंज होता है. Why? Because PCOS पेशेंट्स में रिस्पॉन्स को प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ऐसे पेशेंट्स में यूजली AMH हाई होता है. जब AMH हाई होता है
और हार्मोनल लेवल्स में भी LH कभी हाई होता है, FSH लो होता है, सच काइंड ऑफ हार्मोनल प्रोफाइल्स वी सी. सो ऐसे पेशेंट्स अक्सर कम डोज में भी ज़्यादा हाइपर रिस्पॉन्स करते हैं. And sometimes it can also lead to a complication known as ovarian hyperstimulation syndrome. So you must be in the right hands for getting stimulated, because since the response prediction is difficult and there are a lot of things to be managed, the LH concentrations are to be suppressed, the doses are to be kept minimum, so that you don't land up in OHSS. I remember we had a patient, she was a case of AMH 20. Normal AMH जो होता है वो 2 to 4 होता है. She had an AMH 20, and she was such a high risk case for OHSS, and we stimulated her with a minimal stimulation, and there was no OHSS. She conceived in the first go and she delivered. So this is very important, and we are running OHSS free clinic from last so many years that none of the patients have been hospitalized for this problem. So this is what we are doing for our patients. But what are the tips for patients who are undergoing IVF? ये बहुत important है. So your intake, water intake during your treatment should be minimum 3 liters per day, because जो drugs आपको मिलते हैं, जो medications आपको मिलते हैं, so they are cleared through urine. So if your intake of water is good, then you have lesser chances of doses in your body, and which are going to increase your E2 levels. Then of course your diet has to be taken care of while you are undergoing an IVF treatment. It has to be a very good high protein diet. Then you have to keep a watch for symptoms, because जब ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन होता है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ओवरीज बड़ी हो जाती हैं, पाउच ऑफ डगलस में या एब्डोमेन में पानी भर जाता है. सबसे पहला सिम्टम क्या होता है, एब्डोमेन की ब्लोटिंग होती है. जब एब्डोमेन खिंचता है उसकी वजह से नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है. सो दीज आर द सिम्टम्स. अगर आपको ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कभी भी ये सिम्टम्स लगते हैं, यू शुड ऑलवेज टेल टू योर डॉक्टर, so that she can become cautious about your problem and she can reduce down the dose for your stimulation. Then after your pickup is done, the medications that are being given by the doctor should be proper followed, because जो medications होती हैं, they are not only the antibiotics, but they are also given to suppress this inflammation and this water retention in the body. And you have to take the light diet, and in any case of warning signs, you have to get in touch with your doctor immediately, because it is always better, जितना जल्दी आप उनको बताएंगे उतना जल्दी वो आपके लिए चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, so that you don't land up in any complication. So I think this is what our agenda is, and that let's fight with PCOS together. You are not alone, so that आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अब मुझे PCOS हो गया है, how will I conceive, how will I now get pregnant. It is not the end of the story. There are a lot of patients in PCOS who are conceiving with us, so you can also. It's only the only direct is that you have to reach to the right person for that. So I think that is all with the talk, and anybody who has questions related to PCOS treatment can come up with it. Okay, so this is another question from Ashima. She's saying, I am having PCOS. Can this be passed to my baby too? So Ashima, it is a kind of a yes. There is a genetic predisposition possible. So if you are having a female child, of course there are chances that she might have the PCOS in her future. So there are possibilities of transmission of PCOS genetically. ओके, सो पल्लवी इज आस्किंग दैट इफ पीसीओएस का ट्रीटमेंट अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होगा. अगर आप पीसीओएस का ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो जो आपके सिम्टम्स हैं वो रिलीफ नहीं होंगे. पीसीओएस का सिम्टम इनफर्टिलिटी नहीं है. पीसीओएस का सिम्टम इनफर्टिलिटी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इरेगुलर साइकिल्स होना, फेस पे हेयर आना, बहुत सारे पिंपल्स होना, वेट गेन होना, एंड so all these causes are there, and these symptoms basically hamper your life. आपको अगर normal cycle नहीं आएगा, your weight will keep on increasing, you will have facial hair all over the face and the other areas. How will you go ahead with that? So इसीलिए PCOS का treatment important है. And not only this, अगर untreated PCOS रहेगा तो यूट्रस के अंदर जो endometrium की lining होती है, that gets thickened every
every month because progesterone का exposure नहीं होता है, your chances of having an endometrial cancer, that is uterus cancer, is going to increase if it is untreated. You have high probability of developing a cardiac disease. You have a high probability of developing diabetes. So this PCOS is just not the infertility problem, it is causing a whole metabolic syndrome, dyslipidemia. So all these are the reasons. So PCOS के treatment लेना बहुत ज़रूरी है, and it has to be kept in control. Yes, so Richa is asking कि PCOS होने के बाद pregnant हो सकते हैं कि नहीं. So yes, of course, Richa, PCOS के बाद भी pregnant हो सकते हैं, and the only thing is that how resistant your PCOS is and how responsive your PCOS is. So in case if you are, your weight is under control and everything is there, then of course you should try for 1 year. And if you're not conceiving, you should of course consult an infertility doctor. And if you're overweight, then of course you have to manage your weight, and then you have to take medications, and with the help of medications or injections or IUI, you can of course conceive even in PCOS also. My wife, so Mr. Vivek Agnihotri is asking, my wife is gaining weight. We tested for thyroid, but it was okay. Can this be a symptom of PCOS? So, Mr. Vivek, I would say that isolated weight gain could be the reason for, could be the symptom of other things also. If her cycles are irregular, or if she's having a problem with development of facial hair or acne, or her ultrasound is showing polycystic ovary syndrome, then of course the diagnosis is established. So usually तीन में से कोई एक होना चाहिए, मीन्स या तो क्लिनिकल सिम्टम्स हो, या ओलिगो साइकिल्स यानी साइकिल्स इरेगुलर हो, या अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग हो. So out of three, any two are there, then of course the diagnosis is established. So you should always get an ultrasound done and some of your blood tests also done to establish whether she's having PCOS or not. Okay, so Mr. Surinder is asking that his wife is having PCOS, and is there any solution that it can be treated permanently? See, PCOS is one thing जो कभी नहीं जाता है. It just waxes and wanes. Means अगर आपको symptoms हैं, if the lady has the symptoms, it can be controlled, and it can be benefited with the help of medications like oral contraceptive pills or hormonal pills for some time. And then we can only observe कि वो उन pills के बाद भी normal रह रही हैं या नहीं रह रही हैं. But as such, if you talk about permanent, no solution. It all depends from person to person कि जो medication हमने दिया है उसके बाद उनका response कैसा है, whether she is cured temporarily or she needs continuous medications. PCOS symptoms can be invisible also. Yes. सी मेनी टाइम्स क्या होता है, 50% पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है कि इनको PCOS है, क्योंकि ऐसे केसेस में ना तो उनको साइकिल इरेगुलर होता है. सो ऐसे केसेस अक्सर कैसे डायग्नोज होते हैं, ऑन अ रूटीन एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और एन नॉर्मल अल्ट्रासाउंड. सो येस, देर आर पॉसिबिलिटीज कि कोई क्लिनिकल सिम्टम ना हो और कोई फीचर्स ना हो हर्सूटिज्म के, या बहुत माइल्ड फीचर्स हो और सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज हो एंड पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो. सो देर आर पॉसिबिलिटीज विद दैट. So Swati is asking that her sister is having PCOS and she is afraid to consult any doctor. Are any natural ways or diet which can help to prevent PCOS? So Swati, what is the age of your sister, which is very important? Is she married or she is not married? Is she having any menstrual irregularities or not, or any other symptoms or not? So I think she must not be afraid to consult a doctor, because once she consults a doctor, she would be able to guide her properly, and she will have a proper management of a problem. Yes, through diet, there are diets which are high in antioxidants and green leafy vegetables with less of carbohydrates and more of protein and less of fat. So these are the diets which are usually helpful in PCOS patients to keep them suppressed. But of course, I would suggest that you should consult a doctor. Okay, I think that is all for today's webinar on PCOS, and I hope it was informative to you. So if anybody of you is suffering from this problem
and is facing the challenges of not being able to conceive, then you should consult a doctor, take the supervised advised, and go ahead with the way forward. Okay, so till then, have a great day and wish you good luck.